चलो भाई, ये वाला करते हैं अभी। क्वेश्चन नंबर 3, स्पेसिमेन पेपर का डोरेन। लेट्स ट्राई दिस। Explain why Topay Limited is classed as a closed company. Okay, DORAIN Topay Limited is a UK resident trading company and also a closed company. It has 6 directors, DORAIN and 5 other unrelated individuals. It has an accounting reference date of 30th of April each year. Always pays all amounts due to HMRC by the due date. It is not a large company for the purposes of being required to pay its corporation tax liability in installments. Good, nice. टोपे लिमिटेड शेयर होल्डर्स, तो सबसे पहले अपन ये बता देंगे, क्लोज कंपनी इज अ कंपनी विच हैज बीन ओन्ड बाय एनी नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स in which the control is being exercised by any number of shareholders or क्या था, top 5 directors who are also the shareholders of the company, ऐसा था. So in the current scenario we can see that फिर अपने को ये split दिया हुआ है that Doreen and Basil, जो डोरेन एंड उसका फादर है, मतलब डोरेन्स फादर विल बी connected in individuals who are one person, which is 28%, and then there are 5 directors who are 25%. So that उन दोनों का टोटल 28% प्लस 25% इज 53%. बाकी अदर अनरिलेटेड शेयर होल्डर्स से कोई मतलब नहीं है हमको. 2%, 47% फोन करे, ठीक है, जाए जाए दो. ठीक है. चलो भाई, करंट सिनेरियो देख लेते हैं. डोरेन, reason for a closed company status: a company is a closed company if it is controlled by any number of shareholders or also the directors. Any number of shareholders who are also the directors, ऐसा है, ठीक है. 5 largest shareholders of the company, तो ऐसा है कि 5 largest shareholders and any number of shareholders but they should also be directors of the company. तो हमने अभी देखा कि 6 जन बेसिकली ओन कर रहे हैं, which is good. That's nice. Control is exercised by shareholders who own more than half of the company's share capital. For the purpose of determining control, the shareholder is regarded as owning any shares owned by their associates in addition to the shares which they own personally. Associates include direct relatives. So Doreen is associated with his father. Doreen is regarded as owning 28% of the shares, his own 5% plus his father's 23%. The remaining 5% directors own a total of 25%, so that overall 6 directors own 53% of the issued share capital. The control and control the company. ठीक है ना? So that's the whole thing. हम्म, ठीक है, ए हो गया. ठीक है ना, ये हो गया. आगे एक्सप्लेन विद सपोर्टिंग कैलकुलेशन द टैक्स implications for both Doreen and Tope Limited. If Doreen repays 7,500 loan on 30th of April 2027 rather than 30th of June 2027. अच्छा, ओके, हाँ, इनका अकाउंटिंग ईयर अलग रहेगा, राइट. सो डोरेन हैज एन एनुअल सैलरी ऑफ 78,000 फ्रॉम टोपे लिमिटेड, वाज प्रोवाइडेड एन इंटरेस्ट फ्री लोन of 7,200 from Tope Limited on 6th of April 24. And as we know that Tope Limited is a closed company, so therefore being a closed company, if an interest-free loan is given, so therefore Tope Limited would have paid HMRC 7,500 का 33.75%. सो HMRC को जो हमने दिया रहेगा वो होगा 7,500 का 33.75%, which is 2,531.25. So now when Doreen will repay the money to Tope Limited, now the entire money would be
repaid. So HMRC would repay the entire 2531.25 amount back to Propay Limited. However, here comes the question: when will the payment be made? That is about the timing of the payment. So सबसे पहले हमें इनका अकाउंटिंग ईयर एंड जानना पड़ेगा. इनका अकाउंटिंग ईयर एंड क्या है? See. As an accounting reference date of 30th of April each year. So as we know that the Topay Limited has an accounting reference date of 30th of April each year. So if DORAIN Limited repays the amount back to मतलब वो Topay Limited on 30th of April, HMRC would have to pay the amount. Uh, एक सेकंड ना. Would have to repay the amount on 30th of April 27 only. That is at the end of the accounting period. And but if DORAIN Limited repays the loan on 30th of June 27, so HMRC will straight away pay the amount at the end of the accounting period of the tax year 20 मतलब of 27-28. मतलब उन लोग को 30th of April 28 को मिलेगा वो HMRC से repayment. So it is also the repayment will be done by HMRC. However, the timing of the payment and the cash flow restriction is what plays a part here. ये अपन बता देंगे. चेक कर दे जरा एक बार. देयर विल बी नो टैक्स इम्प्लीकेशन फॉर डोरेन बराबर है, तो उसको कुछ टैक्स इम्प्लीकेशंस नहीं है, एग्जाम्प्ट है उसके अंदर. ठीक है. एज टोपे लिमिटेड इज अ क्लोज कंपनी बराबर है, ये इतना पेमेंट करना पड़ेगा. एचएमआरसी विल रीपे द लोन to Topay Limited 9 months and 1 day after the end of 9 months and 1 day after the end of the accounting period. My bad. So अकाउंटिंग ईयर एंड खत्म होने के 9 दिन और एक मतलब 9 महीने और एक दिन बाद पेमेंट होगा. सो इट्स बेसिकली कि जिस दिन मैं एचएमआरसी को पेमेंट कर रहा होता हूँ उसी टाइम पे मेरे को वो रीपे होता है. ओके. सो इफ बेसिकली आई पे ऑन 30th of April 27, आई विल बी रीपेड ऑन 1st of February 2028. हाँ. हाँ, 1st of February 2028. But if I repay the amount on 30th of June 27, then I'll be paid on 1st of April 28. भाई 3 महीने बाद ऐसा. ठीक है ना. तो भाई वो टाइमिंग का ये देखो, रीपेमेंट विल हैपन ऑन 1st of February 28, 1 year अर्लियर. एंड एक्चुअली नहीं, अकाउंटिंग ईयर एंड के बाद बोला है ना. तो यहाँ पे तो मेरे को अकाउंटिंग ईयर का वेट करना पड़ेगा. अकाउंटिंग ईयर का वेट करने के बाद मेरे को और 9 मंथ्स मतलब भाई मेरे को एक्चुअली 2029 में पे होगा. तो इट्स मच बेटर कि मैं जल्दी कर दूं पेमेंट. राइट. ठीक है ना. सो दैट्स इट. ये भी हो गया. Actually, with the help of supporting calculations, which of the two alternatives for providing loan with assistance with travel cost will produce the lower overall cost for Dorian? ये रहा. Topi Limited is considering two alternatives to assist Dorian with the cost of this daily travel from home to work for the tax year 26-27. Alternative 1. On 6th of April 26, Topay Limited will make an interest-free loan to Doreen of 4,800 equal to the cost of his annual travel tickets season. Okay. एक सेकंड ना. Make an interest-free loan to Doreen of 4,800 equal to the cost of annual travel season ticket. Okay. Hey, wait a second now. मेरे को क्या कॉस्ट पड़ेगा ना. फॉर डोरेन, ओ सॉरी, फॉर डोरेन बोला है. सो टोपे लिमिटेड विल मेक एन इंटरेस्ट फ्री लोन ऑफ 4,800 ऑन 6th of April 26. मेरे को पहला वाला लोन कब मिल रहा था? 6th of April 24. एंड यहाँ पे मेरे को 6th of April 26 को मिल रहा है. ओके. मैं रीपे कब कर रहा हूँ? 30th of June 27. तो बेसिकली सॉरी, हाँ हाँ, 30th of June 27 या फिर 30th of April 27. बेसिकली मैं 26 to 27 के ईयर में तो वो रख ही रहा हूँ. So that means my interest-free loan would now be actually the total of the interest-free loan would now actually be 7,500 plus
4,800 एंड दिस इज इंटरेस्ट फ्री लोन। अब ये सब थ्योरी में लिखे, मतलब वहां पे लिख रहे होंगे। हाउएवर द एग्जेम्प्ट द एग्जेम्पशन is only available till 10,000 as that exemption was breached. Now the entire loan amount will be a taxable benefit. So therefore this into 2.25% is the taxable benefit. ठीक है ना? इसको मेरे को टैक्स भरना पड़ेगा। अब वो मैं टैक्स 40% पे ही भरूंगा। टोपे विल राइट ऑफ दिस लोन on 30th of on 5th of April 27। भाई ये लास्ट डे पे क्यों कर रहा है भाई? डोएन विल इनकर नो एडिशनल ट्रैवल कॉस्ट अंडर दिस ऑल्टरनेटिव। ये लोन को मैं राइट ऑफ कर रहा हूँ। सो नाउ दिस लोन, एज आई वाज प्रीवियसली आल्सो शेयर होल्डर ऑफ द कंपनी ओनली ना, was also previously a shareholder. So now this 4,500 will be 4,800 will be treated as a taxable employment benefit. So therefore, first 500 will be taxed at 0%, and then 4,000 will be taxed at 33.75%. So this into this will be the loan write-off. So now treated as dividend, है ना? जो पहला वाला लोन था वो अलग बात है। आई फील वो हमें क्लियरली, मतलब बस आई थिंक वो क्लोज कंपनी के लिए अलग पर्सपेक्टिव वहां पे चलता है। ये हमें रिइंबर्समेंट के लिए के वे में मिल रहा था। इसके लिए मैं इसको ऐसे लिख रहा हूँ, ठीक है ना? एंड देन ऑफ कोर्स टैक्स ऑन द टैक्सेबल बेनिफिट विच विल बी टोटल टैक्स टू बी पेड विल बी 1562 आ रहा है मेरे को। लेट्स चेक पहले तो। ऑल्टरनेटिव वन पहले बार चेक कर लेते हैं। 1562 परफेक्ट, नाइस नाइस नाइस। ये देखो 1562 सारे रीजंस भी बराबर है कि ये देखो इसके ऊपर अपने को टैक्सेबल बेनिफिट ये अब अपने को आया। तो इसके ऊपर 40% एंड देन इसको हमें एज ए डिविडेंड ट्रीट करना है। नाइस। वो ये थोड़ा कंफ्यूजन, मतलब वो लग रहा था कि वो 20% है कि 40% है, और उसको डिविडेंड ही ट्रीट करना है। परफेक्ट। आगे बढ़ते हैं ऑल्टरनेटिव टू की तरफ। तो पे विल पे माइलेज अलाउंस 3,600 का। Topel Limited will pay an unconnected company an annual fee of 1,000 for the car parking space for Dorian near the company London office. ये जाने ये दो। Parking space is exempt. Dorian has estimated that his current annual cost of driving from home to work will be 5,220, including 1,320 for parking. Okay. Okay. So basically, extra cost incurred for the mileage allowance। माइलेज कितना हो रहा है उसका? बेसिकली वो बोलना चाहते हैं कि 5,220 माइनस 1,320 पार्किंग स्पेस, और ये माइनस करने के बाद जो अमाउंट आता है वो मेरा माइलेज के लिए है। माइनस मैं करता हूँ 3,600, जो मेरा एक्चुअल एक्सपेंडिचर, या सॉरी जो मेरे को कंपनी दे रहा है। माइनस किया तो 300 मेरे को एक्स्ट्रा कॉस्ट आता है। ठीक है। अभी
टैक्स टू बी पेड में क्या आएगा, इनकम टैक्स पहले आएगा, या ये मेरे को फिर भी भरना ही पड़ता है माइलेज अलाउंस, मेरे को मेरा एम्प्लॉयर दे रहा है, भले ही मेरे को उतना फॉरवर्ड नहीं रहा है या उससे उससे ज्यादा एक्सपेंडिचर हो रहा है, लेकिन फिर भी मेरे को 40% का टैक्स भरना ही पड़ता है। एंड देन क्लास 1 एम्प्लॉई बेनिफिट्स में ये आता है, उधर है वो जो रीजनिंग्स है ना, उसमें है कि अगर वो वर्क टू होम या होम टू वर्क बेसिकली अगर है ना, तो उसके लिए मेरे को टैक्स भरना पड़ता है। वो आता है पे 0.02%, क्योंकि 2% ही बुरा आएगा, क्योंकि मेरी ऑलरेडी सैलरी जो है वो एम्प्लॉय बेनिफिट्स मतलब एम्प्लॉय में चली जाएगी, तो 8% और 0% दोनों यूज हो ही रहा है। therefore the summation of Doreen is 1812, which should be the answer, 1512 and 1812। चलो नाइस, लेट्स गो क्रेजी। ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया। अब आते हैं नीचे, स्टेट विद रीजंस द ड्यू डेट फॉर फाइलिंग टोपी लिमिटेड कॉर्पोरेशन टैक्स रिटर्न फॉर द ईयर एंडेड 30th of April 25। इट इज 30th of April 25। 24 का ईयर एंड है, 25 को भरना है, एक साल बाद आप फाइल कर सकते हो, 9 महीने 1 दिन बाद आपको पेमेंट करना होता है अकाउंटिंग ईयर एंड के बाद। एंड द इम्प्लीकेशंस फॉर टोपी लिमिटेड इन रिस्पेक्ट ऑफ फाइलिंग इट लेट। अच्छा ओके, ये थोड़ा नहीं पता, ये देखते हैं। टोपी लिमिटेड इज फाइलिंग इट्स कॉर्पोरेशन टैक्स रिटर्न फॉर द ईयर एंडेड 30th of April 2024 ऑन 29th of August 2025। तो मतलब अप्रैल के बाद 3 महीने हुए हैं क्या? मई, जून, जुलाई, अच्छा जुलाई के बाद भरा है, तो 3 महीने के अंदर भी नहीं भरा है, तो ड्यू डेट वॉज एक्चुअली 30th of April 25। उसके 3 महीने बाद भी नहीं भरा है, तो 100 का आता, अगर 3 महीने बाद के पीरियड में भरा तो 100 का आता, अभी नहीं भरा है। सो दिस माइट एस्केलेट टू 200 आई फील। HMRC issued a notice requiring filing of this return on 8th of June 2024। अच्छा, ठीक है। Topel Limited has filed the corporation tax return for the year ended 30th of April 23 on 6th of July 24। तो ये भी उसने लेट भरा है, but this was filed only within 3 months। So all previous corporation tax returns were filed on time। So therefore we can see that corporation tax return for 30th of April 24 was filed late. However, in the previous 2 years corporation tax returns were not filed late. Only 1 year's corporation tax return was filed late, which is fine। तो इसके तो जिसके वजह से कॉर्पोरेशन टैक्स लायबिलिटी या पेनल्टी जो है वो 1000 पे एस्केलेट नहीं हो रही है, वो क्या बोलते हैं, 100 और 200 पे ही रह रही है, बिकॉज आपने 2 महीने लेट भरा है, तो है ना, 200 या 500 क्या है वो, चेक करते हैं एक बार। 200 ही होना चाहिए। Topel Limited's corporation tax return for the year ended 30th of April 24 should have been filed by 30th of April 25। Perfect है। As the notice requiring the filing of this return was issued before the 1st of February 2025, as the return was filed more than 3 months late, the fixed late filing penalty of 200 perfect will arise। Although the return for the year ended 30th of April 23 was also filed late, the penalty would not be increased to 1000 as a result, sorry, as the return for the year ended 30th of April 22 was filed on time। Perfect। 500 नहीं, वो 1000 का अमाउंट है, ठीक है ना। फाइन, लेट्स गो।